Namaste and greetings to everybody over here. Thank you so much for being here. I welcome you all to one of the most anticipated sessions of Valley of Words Literature Festival, that is the VoX Populi Parliamentarians Debate, where the illustrious panel of esteemed lawmakers will be cutting across the spectrum and putting forward their views on today's event. So the topic for this year is a double-digit growth is possible only with urbanization. So Rajesh, यहाँ उपस्थित आप सभी का वॉक्स पॉपुलाई दी एमपी डिबेट के इस दिलचस्प सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम इंडियन एमपीज के अर्बनाइजेशन के विचारों से अवगत होंगे कि अर्बनाइजेशन से भारत को विकास और डबल डिजिट ग्रोथ में बहुत फ़ायदा मिला है। इस पर एक डिबेट होना चाहिए, इसलिए अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज इस सेशन की कन्वीनर डॉक्टर आमना मिर्जा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कला और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं, को मंच पर आमंत्रित करता हूं ताकि वो हमें इस सेशन के महत्व के बारे में और बताएं। धन्यवाद। Namaskar, greetings to everyone. Welcome to VoX Populi Parliamentarians Debate, as pointed out, a very washed out session here at Valley of Words International Arts and Literature Festival. In this session, every year, we have been having an illustrious panel of esteemed lawmakers cutting across the spectrum and coming forward to present their views on a very significant topic in a freewheeling manner. हर वर्ष वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल आर्ट्स और लिटरेचर इस महोत्सव में वॉक्स पॉपुलाई पार्लियामेंटेरियंस डिबेट का हम आयोजन करते हैं। इस सत्र की मैं क्यूरेटर रही हूं और इस वर्ष भी हमने इसे क्यूरेट किया है। यहाँ पर हम संसद के विभिन्न प्रतिनिधियों के विचारों द्वारा कुछ प्रमुख विषय को, सार्वजनिक विषय को समझने का प्रयास करते हैं। As you all know, our life needs creative inputs and debates. Ideas, especially from the public representatives, add new dimension to our understanding of the issues. जीवन में सकारात्मक सोच, नई सोच सदा अनिवार्य होती है और क्या अच्छा नहीं होगा कि इस नए विचार की जो लहर है हम हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा हम समझें, उनके एक्सपीरियंस से, उनके विचारों के साथ विषय को समझें। As you all know that हर वर्ष हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस उपस्थित होते हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए। सो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड दिस ईयर टू we have a diverse set of MPs coming forward to express their views in this very meaningful dialogue. इस संवाद मंथन को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी विभिन्न संसद के प्रतिनिधि हमारे बीच आज उपस्थित होंगे, अपने विचारों को हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे और जो विषय है that we have tried to understand, a double digit growth is possible only with urbanization. क्या शहरीकरण ही एकमात्र आयाम है विकास के लिए? देखिए, विकास हम सबको चाहिए, लेकिन क्या उसका रास्ता शहरीकरण द्वारा होगा? और यदि इस विचार को हम समझें कि आज अर्बनाइजेशन और ग्रोथ जो हमारा आने वाला समय है, अमृतकाल, उसके लिए बहुत अनिवार्य है। The topics concerning development, industrialization, growth models are very important for the Amritkal also. And if we can handle this well, we can surely handle the future scenario also. यदि हम इस मंथन को सही रूप से कर सकें और इसको सही तरीके से आगे बढ़ा सकें तो निश्चित रूप से ये एक लाभदायक होगा। आज हम देखेंगे आपसे कुछ ही देर में संसद के विभिन्न सदस्य हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं, अपने विचार रखने वाले हैं और जो विचार जिस पर हम जो टॉपिक जिस पर हम उनके विचार मांग रहे हैं कि अ डबल डिजिट ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली विद अर्बनाइजेशन। कुछ आंकड़ों के साथ, मैं कुछ तथ्यों के साथ आई विल प्रेजेंट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन व्हिच we as a team decided that we will be debating this topic. I like to present before you all that the United Nations Habitat World Cities Report 2022 points out that India's urban population is estimated to stand at 675
million in 2035, the second highest behind China's 1 billion. And the report also says, यही same report एक बात को उजागर करती है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, that is in Asia, in the last 2 decades, China and India experienced rapid economic growth and urbanization, which led to massive reduction in poverty. तो आज हम अपने संसद के सदस्यों से जानेंगे क्या अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जनता को हम जन कल्याण के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. देन शहरीकरण एक किसी भी प्रक्रिया की तरह जटिल है. अर्बनाइजेशन involves many dynamics from sanitation to technology to ecology amongst others. Are we prepared for it? क्या हम तैयार हैं? And then can this task be dealt only by the government, or does it require greater collaboration, greater coming together of non-governmental organizations, of civil society, of citizens, of corporate sector amongst others? Then we will also try to understand that urbanization is often cited as the reason for emergence of competitive business markets, which leads to neglect of the rural areas. शहरीकरण के कारण एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या गांव हाशिए पर चले गए हैं. तो इस पर भी हम उनके विचार को समझेंगे और फिर अंत में जैसे as we pointed out that our life needs creative inputs and views of public representatives definitely offer an innovative ray of hope. So we'd like to ask our public representatives with respect to what is their dream idea. वो कौन सा एक वो जादू का मंत्र है जिसको वो समझते हैं जिसके कारण यदि ये हो गया तो विकास और संतुलित विकास का जो एक पैमाना है वो सुनिश्चित होगा. So once again आप सबका स्वागत है वॉक्स पॉपुलर पार्लियामेंटेरियंस डिबेट 2022 में. A warm welcome to everyone. And yes, now without further ado, let's understand the context better and let's understand the views of our illustrious lawmakers, parliamentarians from various political parties cutting across the spectrum in this year, sensitizing us, making us understand the very important topic, a double-digit growth is possible only with अर्बनाइजेशन. और यहाँ पर एक मैं चीज ऐड करूंगी कि अर्बनाइजेशन के बाद हमारे विषय में है क्वेश्चन मार्क व एक्सक्लेमेशन. एक साहित्य व कला के मंच के रूप में हमने कोई पक्ष नहीं लिया है, हम निष्पक्ष हैं. वी आर एब्सोल्युटली न्यूट्रल. दैट्स व्हाई वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन एवरी ईयर in our respective topics. So once again, welcome to everyone present here, as well as to all our online viewers who will be watching this debate. Let's brainstorm on the very important issue of growth, industrialization, urbanization, and related dynamics. Greetings, gratitude. Over to Surbhi and Rajesh. Namaskar. Thank you. Thank you so much, ma'am, for setting the context. Rishabh, can we just start with the video? Thank you. नमस्कार, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है. वॉक्स पॉपुली पार्लियामेंटेरियंस डिबेट में इस वर्ष का विषय है कि विकास का दहाई आंकड़ा यानी डबल डिजिट आंकड़ा केवल शहरीकरण से ही हासिल किया जा सकता है. आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हैबिटाट्स वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 2035 तक भारत की शहरी आबादी 675 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो चीन के 1 बिलियन के बाद दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी होगी. इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 2 दशकों में चीन और भारत दोनों देशों में शहरीकरण और विकास दर दोनों तेजी से बढ़े हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से बाहर आया है. माना जाता है कि शहरीकरण लोगों के लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है. किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. पिछले कुछ दशकों में खास तौर से वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया तेज होने के बाद से भारत में शहरीकरण की अवधारणा तेजी से बढ़ी है. लेकिन यह भी एक तथ्य है कि भारत गांवों का देश है और गांवों के विकास के बिना किसी भी तरह का विकास अधूरा माना जाएगा. इसीलिए देश में यह मुद्दा हमेशा विवादित रहा है कि क्या केवल शहरीकरण की प्रक्रिया से ही विकास का दहाई आंकड़ा हासिल किया जा सकता है.
बड़े शहर सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतों तक हमारी पहुंच को आसान बनाते हैं और इसके साथ ही शहर व्यापार के लिए बड़े बाजार का निर्माण भी करते हैं और दुनिया भर से अंतर्राष्ट्रीय निवेश और पर्यटन को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। शहर व्यावसायिक नौकरियों के केंद्र होते हैं। इन तमाम पहलुओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए ये मान सकते हैं कि शहर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये भी एक कड़वा तथ्य है कि विकास के इन आयाम के साथ पर्यावरण की कई चुनौतियां भी साथ साथ आती हैं। विकास के लिए शहरों के हरित क्षेत्र यानी ग्रीन बेल्ट की बलि चढ़ाई जा रही है, मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है। देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बन गए हैं, जिनमें रहने वाले लोग उच्च और मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन खुद वो गरीबी के शिकार हैं और बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। और ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वाकई विकास के लिए शहरीकरण जरूरी है? कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें यह बात उभरकर सामने आई थी कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। शहरीकरण से विकास की प्रक्रिया को तेज करने के संबंध में तर्क दिए जाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में लोग ज्यादा धन कमाते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान भी करते हैं। अब गांवों को केवल खाद्य, श्रम और कच्चे उत्पादों की आपूर्ति तक सीमित करके देखा जा रहा है। लेकिन भारत के संबंध में बात करें तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और देश के आधे से ज्यादा लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना बेमानी है। बदलते वक्त के साथ अगर भारतीय गांवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम असंतुलित विकास का शिकार हो जाएंगे। अब सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और जिस तेजी से देश में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है, उसमें अनुमान है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, सामाजिक गतिशीलता और पलायन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है और नई पीढ़ी गांवों से शहरों की तरफ पलायन करने लगी है। इस पलायन का एक भयावह पहलू हमने कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान देखा है। आप सबको याद होगा, जब शहरों से अपने गांवों की ओर लौटने को लोग मजबूर हो गए थे और उस दौरान अर्थव्यवस्था को कैसी चोट पहुंची है, इसके हम सभी भुक्तभोगी हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया विकास के लिए जरूरी है, लेकिन इसमें हम सरकार और इस प्रक्रिया में संलग्न अन्य कारकों जैसे निजी क्षेत्रों की भूमिका के बीच संतुलन को उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। क्या शहरीकरण में गांवों की भी उपेक्षा हो रही है? आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, तब शहरीकरण और विकास के बीच के संबंध को समग्र तरीके से देखने और परखने की जरूरत है। तो आइए आज इस विषय पर हम अलग अलग राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों के विचार सुनते हैं। आपने मुझे वक्त दिया और आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं। अगर ह्यूमन लाइफ इंडेक्स को देखें तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ शहरों में निश्चित रूप से बेहतर है, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी सड़क, बिजली की सुनिश्चितता और तमाम सारी सुविधाएं हैं, जिस कारण की जो सोशल फैसिलिटीज़ हैं वो शहरों में गांव के मुकाबले ज़्यादा हैं। इसलिए लोग शहरों में रहकर अपने को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा विकासोन्मुख समझते हैं कि वहाँ पर संसाधन भी अधिक हैं। उसका कारण है कि जो औद्योगिकरण हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो शहरों में ज़्यादा हुआ है, उद्योग धंधे भी शहरों में हैं। तो लोगों को एक आकर्षण ये भी रहता है कि शहरों में रहने से हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हम कोई ना कोई रोजगार कर सकेंगे और हमको अपना भी स्वावलंबी होने का स्टार्टअप वगैरह शुरू करने के लिए हमको शहर ज़्यादा अपेक्षाकृत सुविधाजनक होंगे कि गाँव में उतनी सुविधाएँ नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि केवल शहरीकरण ही हमारे विकास या डबल डिजिट ग्रोथ के लिए आवश्यक है, वो प्राथमिकता है कि शहरीकरण जितनी तेजी से होगा विकास की गति उतनी तेज होगी। लेकिन हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दिए बिना
भारत जैसे कृषि प्रधान देश की जो विकास दर है उसको हम डबल डिजिट में नहीं पा सकते जब तक कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान न दिया जाए। और विशेषकर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर जब तक कृषि को हम प्रोडक्टिविटी उस पर नहीं बढ़ाते हैं और कृषि जब तक हम सार्थक नहीं होती है तब तक हम ये डबल डिजिट ग्रोथ अकेले शहरीकरण के आधार पर पाना कठिन होगा। तो हमारा ये मानना है कि दोनों के साथ, क्योंकि हमारा अभी भी 70 सैकड़ा से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है, अभी भी शहरों में और कस्बों में 30 सैकड़ा पॉपुलेशन ही है। तो उस दृष्टि देखें 70% लोगों को इग्नोर करके हम डबल डिजिट ग्रोथ कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें दोनों तरफ, हमें अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, छोटे छोटे उद्योगों को गांव की ओर ले जाना होगा। एग्री बेस्ड इंडस्ट्री पर हमें बढ़ावा देना होगा कि जो हमारा, क्योंकि हमें बताया ना हमारा एग्रीरियन कंट्री है, तो हमें एग्री बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी जिससे कि गांव में छोटे उद्योग लग सकें और गांव के लोगों को भी रोजगार मिल सके। तो मैं समझता हूं कि दोनों को अगर हम एक साथ लेकर के चलेंगे, शहरीकरण को भी प्राथमिकता देंगे लेकिन हम ग्रामीण विकास भी हमारी उतनी ही प्रायोरिटी में होगा, तभी हमारा देश जो है डबल डिजिट ग्रोथ को पा सकता है। मेरा ऐसा मानना है। देखिए, मैं भारत के परिवेश में ये कहना चाहता हूँ, भारत के शहरों की व्यवस्था भी ऐसी नहीं कि हम सारी 100% पॉपुलेशन शहरों में शिफ्ट हो जाए और वहाँ पर उसका हम भरण पोषण ठीक से कर सकें, क्योंकि हमारी बड़ी पॉपुलेशन आज भी गाँव में रहती है। तो मेरा ये मानना है कि हम शहरीकरण हमारी प्राथमिकता रहे, लेकिन शहरों को इतनी ज़्यादा ना हो कि जिससे हमारे गांव उपेक्षित हो जाए। कि गांव अगर उपेक्षित हो जाएंगे, अगर विकास से गांव दूर हो जाएंगे तो हम डबल डिजिट ग्रोथ क्या, विकास की दर में बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमें गांव के विकास पर भी जो बताया ना कि जो मिनिमम वहाँ की आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं, वहाँ सड़क हो, वहाँ बिजली हो, पानी हो, जबकि काफ़ी कुछ मोदी जी के आने के बाद देश के गांव में काफ़ी विकास हुआ है। हर गांव सड़क से जुड़ गया, हर गांव में बिजली पहुंच गई है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, तमाम ग्रामीण क्षेत्र में नए नए हॉस्पिटल बने हैं। लेकिन इसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है कि लोगों का ज़्यादा सुविधाजनक ग्रामीण जीवन हो, अच्छे स्कूल हो, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हर परिवार को अपने बच्चों की चिंता होती है और लोग शहरों के लिए इसलिए भागते हैं, एक तो रोजी रोटी के लिए, हमको नौकरी वहाँ मिल जाएगी, दूसरे बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी, हमारे बुजुर्गों का अच्छा इलाज हो सकेगा। ये 3 कारण होते हैं शहरों की तरफ पलायन करने के। लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर अगर ग्रामीण पलायन होगा शहरों के लिए तो भी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। अभी हमारा शहरी क्षेत्र इतना तैयार नहीं है कि हम पूरी आबादी को, पूरी इंडियन पॉपुलेशन को शहरों में शिफ्ट कर सकें। इसलिए हमें डबल डिजिट ग्रोथ के लिए, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि गाँव के ऊपर हमको समुचित ध्यान देना होगा और गाँव को भी आर्थिक विकास की दौड़ में साथ ले चलना होगा, तभी हम ये प्रगति की ओर जा सकेंगे। देखिए, हम लोगों का एक लंबा समय सार्वजनिक जीवन में बीता है और अब जब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग, तो एक सपना है कि हमारा देश एक समृद्ध देश बने और दुनिया के अग्रणी देशों में, जो 5 विकसित देशों में हमारी देश की गिनती हो, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि हम दूसरे पर किसी तरीके से आश्रित न हों, बल्कि हम दूसरे देशों के काम आ सकें। हमारा औद्योगिक विकास इतनी तेजी के साथ बढ़े, जैसे रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में इधर भारत ने काफ़ी काम शुरू किया है, लेकिन ये काम अगर पहले प्रारंभ हुआ होता तो आज हम बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का एक्सपोर्ट कर सकते थे। अभी भी हमको बहुत सारी चीज़ों पर दूसरे देशों के उत्पादों पर आश्रित होना पड़ता है। 140 करोड़ आबादी का देश, अगर हम दुनिया के दूसरे देशों पर आश्रित हैं, ये भी हमारे लिए चिंता है। तो हमारा सपना है कि हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में, समृद्ध देश के ऊपर, दुनिया के, जो कि कभी एक ज़माने में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत विश्वगुरु कहा जाता था, तो कम से कम हम उस लाइन में जो हमारा अतीत था उसको एक बार पुनः प्राप्त करें। ये अभिलाषा है कि अगर मेरे जीवन काल में हो सके तो मैं जीवन धन्य समझूंगा। जय हिंद, जय भारत। I don't think so. What you're saying, I don't think is an answer for the world today. Urbanization takes place because job opportunities emerge in a better way in an urban area because there are company, there are offices and set up establishments. So you have more jobs in an urban area. So that is why people get attracted towards cities.
but that is not an answer for development. Answer is wholesome development of the entire country. If India or any other country, I would say, would do well only if all areas do well. Uh, if you have good infrastructure, if you have medical facilities, schooling facilities, transportation facilities, if you plan your country well, if you plan your state well, I don't see why people in India would not like to live in semi-urban areas. I wouldn't say rural. You know, what happens today is, if you cluster in urban areas, then you create ghettos. What are these slums? And what is the condition of these slums? How much space do you give to each family to live in a slum? What is the hygienic conditions of these slums? Look at the kind of toilets or the sewage systems in these slums. So, developing big slums is not an answer. Developing the country is an answer. Make your villages modern villages. Make your new cities Wi-Fi cities. These cities can be outside the network of the main urban areas. As a parliamentarian, I had put this question to the Development Minister of Government of India in Parliament. I said, sir, all your smart city projects are concentrated in only developing a few wards in a city जिसमें आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर देते हो and you don't come to know. You can't even know what has been done. First, sewage people will dig and then go away. Then the roads will come. Then pipelines will come. Then electricity board will come. And they keep digging the same thing all the time. So at the end of the day, 400 crores, 500 crores get spent in 5 wards and you don't come to know what's happened. On the contrary, if this 500 crores was spent to build a new city, a green project, I'm sure it would have benefited the city much more. Because sanitation, sewage, hygiene, lighting is part of a municipal service in any case. You don't make a city smart by doing this. Every city should be smart to this extent. So I disagree completely that urbanization is a panacea. I feel while you make your urban cities livable, make communication easy, job opportunities are there in these cities. But the real challenge which lies with the country is to develop its semi-urban areas, rural areas, have job opportunities emerging in those areas, whether it be animal husbandry, whether it be agriculture processing, whether it be small scale industries, MSMEs, same thing. If it is located in a rural area or outside the cities, you will have better environment, less pollution, less crowding, better housing facilities, a happier neighborhood. So I feel that the answer is a wholesome development of a country, not just urbanization. Again, this is an issue which I have been raising with the states and my friends in the states. I always tell them that what is the kind of planning that you do? You appoint politicians to these planning boards in the states. These development authorities are like planning areas. Jabalpur Development Authority, Indore Development Authority, Bhopal Development Authority. You have development authority in every city. Now this authority is supposed to develop that city, plan for the development of that city. My question is, who are the people that you are appointing? Your politician friends who are ill-equipped to even think about the city, they think of themselves. You should have town planners, city planners, environmentalists. You should have experts of the domain planning the city. That is why the cities which have done well in terms of looks today, I mean in terms of infrastructure and modernity, it's something like you see New Raipur, you see Chandigarh. I can add a few more cities which have new cities. Now, why have these cities done well? Because they were planned by experts. They were not planned by politicians. So town planning is an expert job. Town planning cannot be left to laymen. Town planning cannot be the domain of a politician.
You can have a politician who's a good town planner, but it has to be, this responsibility must go to a good planner, city planner, environmentalist. He should be able to plan the roads, the sewage, the lights, the Wi-Fi network, where should be the institutional area, where should be the education area, where should be the residential area, how commercial areas are to be set up. It's a big, huge plan. You go to Singapore. What is Singapore? It's a plan. Singapore has worked on a plan. You go to Thailand. If you have the biggest auditorium in the world, I've been to that auditorium. There was a Rotary World Conference. We had nearly 40,000 people there. Do you have in India one infrastructure which can boast that you can bring 40,000 people in one place? This country cannot host a Rotary World Conference. But Singapore can. Bangkok can. Because we've not planned. And you can't have it in Pragati Maidan. That should be somewhere outside the city. When you're bringing such a project, you also need to think that it should not be congesting the city further. Take it out of the city. Build a new city. And build a new setup around it. Where you'll have hotels, you have commercial areas, you'll have schools, then you'll have colleges, you'll have hospitals. So my problem with this country is, we guys don't plan our cities well. My problem with this country is that the politicians, the governments, essentially the governments, are either manned by politicians or by these bureaucrats. Now, bureaucrat is happy looking for his posting and his good tenure. To an extent, he works, but he's not permanent. He's there for 2 years, 3 years, depending on political exigencies. The politician there is only interested that I should win my next election. There has to be some separation of thought process where people interested in the development of the country should be separate from these people who cannot think for the country or the city long term. There's no competition between urban and rural. The rural setting supports the urban market. And the urban market should be catering to the rural need. If village needs a tractor, the shop will be in an urban area. But the use is going to be in a village. If you want to buy grocery, the factories may be spread anywhere in the world or anywhere in India. But the outlet may be in the city, it could be outside the city. You can have, you go abroad, don't you see these malls everywhere, even outside the towns? And even in those malls, you'll find 150 cars standing there. So you have to develop infrastructure and make available facilities and utilities everywhere. So each one supports the other. There's no competition. An urban area should be supporting the rural area, and the rural area should be supporting the urban area. Indians do well, but India doesn't do well. The same Indian abroad, you see the kind of discipline he lives in, the kind of discipline he follows. The same Indian, when he comes out of Indira Gandhi Airport, he's a different man. So there has to be a rule of law. Obedience to rule, obedience to law should be ingrained in your character. I remember a very senior politician, I won't name, very senior politician of India, once telling me, he said, Vivek, I went to Sweden and I was driving my own car. It was a small township where he must have gone for some shopping or something. So he said, I went and parked my car at a wrong place. You have earmarked places for parking. He says, a small girl walked up to me. She says, hey, mister, you can't park your car here. You have to park it somewhere else. So he says, by accident, asked her, who are you? जो इंडिया में एक आदत होती है ना, तुम होते कौन हो बोलने वाले टाइप्स. So she says, I am the state. I am the voice of the state. Everybody is a policeman. Everybody is the voice of law. Everybody is the voice of state. Every citizen is the law. So
policing should not be because only by a policeman. When every citizen becomes a policeman, the country will be a happier country. ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ এনवायरमेंटਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਕਲਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁਲਕ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾ, ਇਹ 70% ਆਬਾਦੀ ਇਹਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੌਖਾ, ਸੁਖਾਲਾ, ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋੜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ 14ਵਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ,
ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਣ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारा ड्रीम आइडिया, हमारी तो सुझाव है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए। इंडस्ट्री रोजगार दिंदी है, पर इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी आ वो जो एनवायरनमेंट के पैरामीटर आ उन्होंने फॉलो करे। सो साडे मुल्क दे विच होया की है, इंडस्ट्री लगी ड्रेनां दे कंढे, दरियावां दे कंढे, पर उन्होंने अपना ना तो पानी ट्रीट किया, वो नदियां दरियावां सिट दिता, साडा थल्लड़ा पानी जिहड़ा है 400 फुट तक पानी साडा प्रदूषित हो गया। वो जिस इलाके दे विच जिहड़ी पानी की जिहड़ी हैगी वो कमी आ गई, जहरीला पानी आ, दरिया गंदे हो गए, तो उहदे नाल जिहड़े गरीब लोग आ वो पानी दुखों ही मर रहे, पानी पी के मर रहे। सो ये जिहड़ी जो कुछ भी हैगी है साडी जिहड़ी गरीब लोग आ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 1973 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ, 1986 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟੇਜ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪਈ, ਮਾਲਵਾ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। पहले तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू वॉक्स पॉपुलाई वंस अगेन. Let me state it very clearly. My position is in sync with the reality what we are experiencing. You know, double-digit growth is indeed essential, and a kind of urbanization which shall provide opportunities to common citizens. I think that's what actually double-digit growth entails if you translate that into ground reality. But worrisome is the fact is that our growth so far has been faceless. We have been talking about in last couple of years, the growth is largely jobless growth, a faceless growth. Unless we have a double-digit growth which has faces and which has a base from below and whose trajectory could be seen by everybody that I belong here. I think that is what is needed, but that's a kind of missing component. I mean that's worrisome for me, but I'm an eternal optimist. I believe someday we'll revise and we'll have course correction. मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से. इनफैक्ट यू नो व्हेन वी से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म should not appear as a mere empty rhetoric.
it should go on to touch and have a kind of collaborative engagement with all the states and the center as well as all the stakeholders. क्योंकि देखिए जब हम शहरीकरण या नगरीकरण कहते हैं तो शहरीकरण में एक शब्द शहरी आता है. एक शहरी का मतलब अगर उर्दू को मैं इसमें ट्रांसलेट करूं तो नागरिक. एक नागरिक के रूप में लोगों को क्या मिल रहा है ये बेहद आवश्यक है. और उसके बगैर अगर हम कोई शहरीकरण की कोशिश करेंगे तो अंततः क्या होता है कि बड़ी इमारतें बनती है लेकिन उन इमारतों में जो इबारत लिखी जानी चाहिए थी वो मिसिंग हो जाता है. मेरा मानना है कि बीते कुछ वर्षों में एक जो हमारा पहलकदमी का तरीका जिसमें एक क्या कहें उसको कि एक हैंड होल्डिंग होनी चाहिए स्टेट, सेंटर, सिविल सोसाइटी और अदर ग्रुप्स की, उसमें मुझे थोड़ी कमी दिखी है. बट एट द सेम टाइम आई बिलीव दैट देयर इज अ ग्रेटर रियलाइजेशन इवन अमंगस्ट स्टेट टू हैव मच मोर मीनिंगफुल कोलैबोरेशन विद द सेंटर. उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, इसमें कुछ प्रश्न फिजिकल रिलेशनशिप के भी आते हैं सेंटर और स्टेट के, जिसके लिए आप अगर देखें तो हाल के दिनों में अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है. उन चीज़ों को भी एड्रेस करना होगा ताकि जो हमारा शहरीकरण होना वो आधा अधूरा ना हो. शहरीकरण का मतलब होता है अवसर भी होना. शहरीकरण का मतलब होता है कि समावेशी विकास शहरों में देखा जा रहा है. शहरीकरण का मतलब ये भी होता है कि जो चीज़ें वैसी छवियाँ जो शहरीकरण के नाम पर एक धब्बा सा है उनसे भी हम मुक्ति पाएं, उनसे छुटकारा पाएं, ये आवश्यक है. देखिए एक चीज जो हमारे लिए गंभीरता से सोचने का विषय होना चाहिए कि दो तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है. एक जिसको हम कहते हैं प्लान्ड अर्बनाइजेशन यानी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है. एक हो रहा है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन जहां शहर गांव की सरहद को पार कर जाता है. चाहे छोटे दुकान, छोटे यूनिट्स कुछ लग गए. मैं जैसे अपने शहर को देखता हूँ तो मेरे शहर और मेरे गांव के बीच की दूरी खत्म हो गई है. मेरा गांव शहर का हिस्सा हो गया. ऐसे में क्या होता है कि जब आप प्लान्ड होता है तो आप सब कुछ देख पाते हैं, पर्यावरण को देख पाते हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज को देख पाते हैं. लेकिन अनप्लान्ड होता है तो बहुत सारी चीज़ें जैसे ड्रेनेज सिस्टम आपका कैसा है, आपने जैसे अगर आप देखें कि शहर के अंदर होता है कि एक तरफ सर्विस प्रोवाइडर है, एक तरफ सर्विस सीकर्स हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसी हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है जो माइकल फुको कहते थे कि एक तरफ हमने तय कर लिया कि ये परपेचुअल सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे और शहरों से दूर रहेंगे, उनकी ज़रूरत होगी कि मेड के रूप में आएंगे और फिर हमें उनकी चिंता नहीं होगी कि वो कहाँ जा रहे हैं. इस तरह की व्यवस्थाओं पर जब तक हम एक विराम ना लगाएं, उनको रिवर्स ना करें, तब तक ये चिंता और ये प्रश्न बने रहेंगे. देखिए मैं इस बात से मानता हूँ कि अभी भी अर्बनाइजेशन के स्पीड, पेस को देखने के बावजूद हिंदुस्तान की हकीकत अभी भी लार्जली गाँवों में है. तो क्या हो रहा है कि हमारी चिंताओं में शहर सबसे पहले आता है. इसको आप कॉमन चीज़ों में देख सकते हैं कि शहर में अगर किसी एक व्यवस्था का अभाव होता है तो 24 घंटे सातों दिन आप देखेंगे टेलीविज़न पर या मीडिया में ये विमर्श चलता है. गांव के अंदर कोई किन्हीं चीज़ों का अभाव होता है, वो हमारे विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाता है. तो ये विसंगति को जन्म देता है. गांव को आप कंप्लीटली, कम से कम अगर मैं आने वाले 100 वर्षों में भी देखूं तो गांव बिल्कुल मिसिंग नहीं होने जा रहे हैं, गांव की उपस्थिति होगी. तो आवश्यकता इस बात की भी है कि शहरीकरण के साथ एक संतुलित विकास गांव तक पहुंचे, एक सार्वभौमिक विकास गांव तक पहुंचे, एक सर्वांगीण विकास गांव तक पहुंचे. और दोनों के बीच में जो रिश्ता हो ना वो उस तरह से हो जैसे ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके बीच में एक वेस्टिब्यूल होता है. उस तरह के रिश्ते की जरूरत है. वेस्टिब्यूल नहीं होगा तो गांव कहीं अलग थलग पड़े रहेंगे, शहर हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा, जो निस्संदेह मुझे एक बहुत बेहतरीन विकल्प नहीं लगता है. देखिए सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं ना कि विकास की पूरी अवधारणा ऐसी हो, हर व्यक्ति को अपना चेहरा दिखे, हर समुदाय को अपना चेहरा दिखे. ऐसा ना हो कि कुछ चेहरे विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल जाए और बाकी सब पीछे छूट जाए. ये जो आगे निकलना और पीछे छूटने वालों के बीच की दूरी है ना, वो जब कम हो जाएगी ना, फिर हम अपनी अधिकांश समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे. नहीं, मैं चौथा विकल्प रहता हूँ. डबल डिजिट ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल इफ we have an adequate balance between urbanization and the reality of rural India.
अगर ये संतुलन नहीं होगा तो हम असंतुलित विकास देखेंगे और मैं समझता हूं कि समृद्धि के महासागर को मिस कर जाएंगे। असमानता के महासागर में 5 समृद्धि के टापू देखेंगे और ये जाहिर है ये हकीकत प्रेमचंद को भी पसंद नहीं आएगी। You have raised 3 questions in one question. Number 1, it is about equity, equal distribution of wealth. What you are saying is, now today's prosperity of urban area is an answer by itself, per se, the rural poverty, which cannot be. For example, let me say, in my locality, one person has billion rupees, and all of us are the laborers. You think my standard has gone up only because it is $1 billion when we come out? Per capita, when you look it will be more, but I am not earning that. That what exactly the question. Today it is true, number 2 question, it is true that there is kind of people from rural area coming to the urban. It is true. It is for social reasons and economic reasons. It is not economic betterment of it. It is not standard of living going up. As compared to the living in the rural area, they might be doing it. But it brings along with it in its state lot of other problems that we need to face. But however, they again attract the well-being. Well-being is a bigger line than economic growth. Economic growth only aims at well-being of a person. Now, so this is the other question. To say that urbanized income is an answer to rural man's poverty, as I said in the first area, is something which you need to be understood and rejected. It is true. Today in the rural area, if you give him the internet, he'll have a better life. But with the internet, he has same right provided he is given. The demands of viewers. You see, India has 2 nations within one. That we call India, that is Bharat. The Bharat where people live, that is India, is today still 60%. 40% is the urban. It is going up to 53%, if not today, by 2050. Agreed. But today, let me say, earlier, let us go back and look at this. What is the need of any man is standard of living going up? Where would he go? Is the urban area prepared to take him up? And is he prepared to give the job? The employment provider is agriculture. We must know. 60% of people are being absorbed. But yet, I know its GDP, contribution to GDP is something like 15 to 20%, which was once upon a time 30 to 40%. But again, economic growth. Today you will see 1% of people holding 73% of nation's wealth, 10% of people holding 78% of the nation's wealth. The remaining are holding only 36%. Now this kind of hiatus, this kind of divide that you see today should be answered first instead of thinking urbanization. Urbanization is only way of living. But is it ensuring you the economic stability, economic prosperity? If I come here, from rural area, I will only take up to rickshaw pulling. My rickshaw pulling might have given me better wages than what I am getting in my rural area. But my cost of living in rural area is less than what exactly it is in the urban area. And the social infrastructure about which you talked, the dynamics which you say, technology which you have talked, are we prepared with them? Is it ready with them? No. When we are not there, you can't, first of all, the question is today you can't stop urbanization. That is truism. When we can't stop urbanization, we try to see that urbanization, that rate of growth of urbanization, that increase in urbanization, how do we tackle the problem? That should be our problem. But as it stands today, to say urbanization, with it increased
productivity or increased income will be answer is wrong. As I gave you the example, 1% of rich today holds 73% of national wealth. If that is what exactly you are looking to, the prosperity or the economy, thanks with it, we need a nation like that. Cooperation is home. So with There is an industry. With whom should they cooperate? They can give an employment. But what is the proper? An industry looks to profit. When it looks to profit, it tries to minimize the intake of the labor. That means labor will be cut. So what we must have is labor incentive industry. The greatest labor incentive industry is agriculture. Today, in spite of, as I said, 25 only 15% to 25% GDP, it is now sustaining 60% of people. That is what exactly is the equity growth. It might not be growth and giving me the salary which other man in the industry is getting. So this must be looked into when we talk about equity. Everybody wants double-digit growth. To say only urbanization issues is wrong. But urbanization per se, I am firm. I am not trying to sit here and there in a fence and say firm urbanization is never an answer. The total national outlook, the total growth, inclusive growth which we call. And inclusive growth, when you talk about integration, it is not Hindu-Muslim integration. It is not this caste and that caste joining together. Rural and urban becoming one is integration. National integration as a new definition now, that is the rural and urban should become one. Where if you say urban, focusing on urban will bring the 2-digit is a wrong thinking. Dream idea is one thing is poverty, removal of poverty. That is the dream idea of everybody. How do we get it? But there is social dynamics to it. We must respect the diversity. Unity in diversity. That is the first thing. And we must know how we have become, because we are talking during the 75th year of the our independence. What exactly we have done? 562 or 592 states have joined together, states joined together to make a union. Now that means everybody was independent by self. It was a nation within the nations, multinational nation. To respect that and to make it one, we must respect the federalism. So the federalism today is given a go by and centralization becoming is a slogan. That must go. So my dream idea is nation must respect the diversity in our unity. It must concentrate on economic equity and growth. Standard of living must grow. That only comes through social control. It doesn't come through profiteering. It comes through social control. Have them, let the private sector and the public sector join together. Don't sell the nation. Don't sell national capital, which are one. But if they are not running well, correct them. If they are not being corrected, remove them. But look to the labor incentive things. Look to unemployment first. That means unemployment problem, and look to employment aspect of our growth. Personally, I would like growth to happen at the rural level, just as Mahatma Gandhi would have liked. But what we have seen over a period of time, the neoclassical economic model of increasing the size of the cake and then allowing it to trickle down to the poor, what we have seen so far is that all the developed countries in the world have progressed by urbanizing their cities. That is, the people in rural areas, they migrated to the cities. So the developed countries now, I think about 70% people live in the urban cities. And India and China, they are moving in that direction, and that is also evidenced by the fact that the GDP of these countries are growing, and therefore more opportunities are being created in the cities, and those opportunities are coming from various sources. One, of course, is the manufacturing, but the huge service sector that is growing, particularly in India, and the gig workers. Now, the various categories of gig workers who have proliferated in urban cities in India now.
that is use of technology. So the urbanization process that's happening with the growth, I think, is almost inevitable now. And because it creates opportunities, creates employment opportunities, and therefore people migrate. So while I would love to actually have rural areas, a growth model that is based on rural areas, therefore the growth happens at the bottom of the pyramid instead of happening at the top of the pyramid, the evidence suggests that it is already happening in the reverse way. That is, first in the urban cities, people are migrating there, and then some amount of money is going to the rural areas. But I think a balance is required. A welfare government will have to look after the rural areas as well. In this process of urbanization-led growth that we are seeing, the problem is that there are challenges which are coming up in the urban sectors. The slums are coming up. The pressure on the infrastructure is so high, be it roads, be it sanitation, as you mentioned, hygiene, the basic services to be delivered to the citizens. Now, all this cannot be actually addressed by citizens. However, we may like to have the government look after all this. We know that in a country of the dimension of India, both geographically and in terms of population, the delivery of services to the citizens cannot be done by government alone. Even if government provides the resources by provisioning for it, the distribution can only be done if all the stakeholders follow a collaborative approach. And when I say stakeholders, it is the private sector, it is also the non-profits, it is also the citizen organizations, it will be even your welfare associations. All these will have to work together to make a clean city, make a city which is equitable, make a city in which all the benefits or all the infrastructure facilities are not just concentrated on the urban rich, but it also goes to the urban poor. So I think there are just no two opinions about this, that we need the support of the private sector, the citizen groups, the non-governmental organizations, and even in some cases the individuals themselves. They will have to realize their rights and duties and responsibilities, not just rights. And all these would contribute to making the entire process sustainable, equitable, and I think in the long run, a very fair and just system. Is this the best way to move forward in a sustainable manner? And when I say sustainable, not just in terms of environmental sustainability, but social sustainability, economic sustainability as well. And for this, the governments and the city corporations, city councils, they will really have to plan well, because they will have to see what is the inflow of people that are moving to the cities. And if they can develop catchment areas or areas around, the main city in the suburbans, then things would actually become better, because currently India's contribution to GDP comes from cities, urban cities, to the extent of 60%, but they occupy only 3% of the land. So I think they have to fan out, and then it is easier to provide some of those facilities in a more sustainable manner. Having said so, I would also think that this long-term urban planning involving these areas, suburban areas, from where people are actually coming in, and not really forcing them to come by concentrate, because all the facilities are concentrated in the main downtown area, but moving some of those facilities to the suburban areas and adequately providing for it there, just like the developed countries are doing now, even China is doing now. I think that would be the best way, instead of having a reactive kind of an approach, to have a proactive approach. Think about the future from before, make various scenario plannings possible, and then work out a plan for the city, that this is the kind of population that will grow, and this is the kind of infrastructure that we will have to meet. There could be a situation in which you realize that the city itself can't sustain that kind of an infrastructure. Then you tell people, or you create incentives for people not to migrate to the cities but to the suburbans, and in which case the city grows in a fair manner,
and as I said before and as you mentioned, in a just manner. That is, the suburbans also have the same level of facilities as the downtown. As I said before, that the best way is not to allow all the people from rural areas to migrate. To me, I'm a great believer that wealth should be created at the bottom of the pyramid, and then the trickle down leakages can be avoided. So I think any welfare state, while doing all these things, must eventually have to create that kind of infrastructure in rural areas and create employment opportunities there, that people will not have so much of incentive to move to the cities as they are having now. The growth story that one talks about in the world, not just in India nowadays, is the economic growth model. Again, I am a believer in a growth model which is inclusive, which is equitable, and which takes care of climate and democracy. So therefore, when I say that we need a double-digit growth, what people are really talking about is double-digit economic growth. But what I think is more important, because this growth will have no meaning unless the society becomes more equitable, unless the society, the poor in the society get a fair share of this growth process. The way the competitive strategies that you talked about, the kind of competition that generates at the city level, because everyone is competing for this growth, the poor people are unable to, catch on to that bandwagon or jump into that bandwagon, because opportunities, first of all, are not available. They do not have the skills, they do not have the abilities, and therefore it is very important that government must invest on health and education and all, to improve the abilities of citizens at the rural level, so that they can actually find out those opportunities and then try to take advantage of opportunities to improve their own growth. Then only the growth will become equitable. Otherwise, the growth story in which there are huge amount of inequity between the rich and the poor, and the rich and the disadvantaged, men and women, I think that's not ultimately sustainable. Various economic downturns that one faces, for example, now one is facing 2008, the crisis. It has made economists and public policy leaders all over the world to realize that ultimately the growth will be sustainable if the society remains sustainable, the society remains equitable, the society remains people talk about social capital. So unless the social capital is maintained, social capital is high, people's interaction with each other remains good, the society will break up. So with a high growth strategy, if the society itself is unstable, then civil strife will take place. People who are very poor, who are not getting anything, would actually try to occupy the place and property of the people who are having more than what they need. And that's what we have seen. The Arab Spring was a manifestation of that. What you see in Sri Lanka as a country, it is facing a problem. There's no two question about that. But the point is why people have, they went to occupy the presidential palace is because they thought that the presidential palace had all the riches, whereas they were not even getting the basic amenities. Therefore, while we do this competitive economic growth strategy, which is the basic based on the assumption of the neoclassical economics, the fact remains that we will have to be aware of the social capital, the social bonding which is necessary for maintaining the society itself to enjoy the fruits of this economic growth, and that can happen only if it flows equitably. I'm not saying equally, equitably. I'm very careful while choosing this word. Thank you. I am for urbanization, not because I love it, but simply because of the fact that that's the way the current growth model is shaping up. But I want to look at urbanization in a very different way. I don't want urbanization to take place in only the existing cities. I want urbanization to take place in the tier 2 and the tier 3 cities, so that what happens is that the process of
growth gets distributed, and a person who to probably require to walk or to drive 100 kilometers earlier to reach an urban center to get his opportunities and employment will now probably have to go for 10 kilometers or 25 kilometers. So if it is a distributed model, then I'm all for it, and I think this is what all governments will have to do, and particularly in India with such a huge population which is living in rural areas, whereas the opportunities and employment is being created in urban areas. Under the first question as to what I want in the bucket list, I would feel that I would say that we need to have economic growth, because if we do not have growth, then there will be depravity everywhere. But if you have the growth, then the distribution of it is very important for the purpose of equity and fairness and justice. While following this model, we also have to ensure that we invest and unlock the potential of our people in rural areas who could be actually the game changers in taking India to a new growth trajectory which we have not seen before. So I think we need to invest more in rural health, rural education, building rural infrastructure, so that their abilities, their capabilities are developed, and finally they are able to take advantage of the opportunities which are available to people in the urban areas, in which case automatically they become growth centers and wealth gets created at the bottom of the pyramid. The inequity issue gets mitigated to a large extent. The history of the human being is proved that the development, double digit or triple digit, whatever the manner, that is necessary for the development. But I am sharing my views that not only the people needs not only the economical development, people need cultural and social and systematic development is very necessary. So unitedly we will work for that with the international cooperation. We should work. I think we have some differences with other people also, but together we will work. The thing is that this urbanization and the double-digit growth, the two core idea is here. So double-digit or triple-digit development is not a matter. The development of the man is related to his works. I think the literary works also very influential one. The great poet Neruda told us, you have given the solidarity and friendship to unknown persons. Like that, I think in India, majority of the people, name and other things we don't know, but every man without fear, with proper education, with health facility, and with their own dignity and their own right, if they are able to live here, that is my dream. I think the literary works and cultural movement, it will unite the people. See, the noted poet in Telugu, Andhra, Sriramallu, he told us in his poem, Maryo Prapancham Pilichindi, Padandi Mundaga Padandi Tosu Podam Paipaige. A new world is coming. A new world is coming. Fight for that. Fight for that. That means
the people will be victorious. The literature and cultural activities, these kind of very positive things will given support, and it will make a new world. Core question from you, this one is the urbanization and the double digit development. What I am telling, this double digit or triple digit, that is not a matter. Yet main point is that how it will help the eradication process of the poverty, or how it will give the livelihood of the people, protect the livelihood of the people. These things are my main issues of concern. So mainly what we are seeing here, this economic growth will making some billionaires and millionaires, but poverty is existing. So the main aim of the development should be the eradication of the poverty and assure the minimum facilities to the common people. The Kerala is one of the best example. There the number of millionaires is very less, billionaires is very less, but everybody is getting some minimum facilities. Minimum facilities they are getting. I think this kind of development is very important for the development of our nation. Secondly, regarding the urbanization thing, what do you mean the urbanization? The urbanization not means to make some big buildings like 15 floor, 20 floor or 30 floor buildings. My idea is to provide the modern facilities to the common people, civilized and technologically equipped a society with a transportation facility, hospital facility, education facility, all these modern facilities in an area. But here the urbanization process is making lot of jobless persons, homeless persons. This is not good for the nation and development. Joint movement is very important for the development of the common people and the eradication of the poverty, everything. The joint movement is very necessary. But the policy of the government is not suitable for the joint movement. That is the point. So what I am telling here, the budgetary allocation for the welfare schemes and job-oriented programs, and public sector and entertainments, and including the participation of the common people. Through this way, I think we are able to achieve good, not only the good development of the geographical based development, entire country will get some benefit. Preparation, generally this is our planning board, planning commission. Earlier they have done lot of jobs for future oriented, but now this planning commission was abolished. Some problems are there. Here, interestingly, I am sharing to you some other details from Kerala. In India, 2 districts, one is Pathanamthitta and second one is Idukki. Their minus population growth now we see. That means the population is increasing in basically in northern India, but in South India, then other stories are there. That also you please note. If proper education and health facilities are available, then automatically we are able to manage this, manage the increase of the population. So government should provide education and health facilities and employment arrangements. Then we are able to manage these all things. My dream idea is
the nation, the people living without poverty, homeless, without the homeless people. I will repeat that. Okay. My dream is the people living without poverty, living without homelessness. This is my dream idea. Then all geographically and community based. If everybody is getting education and health facilities, and with the support of the joint movements, that I think that will be we will achieve that dream. Not today. If we work together, then I am sure we will win. We will able to prove the entire things. It's a scientific thing. Urbanization definitely gives opportunities in conjunction with various other factors. If you see most of these Western countries in the last 150 years or 200 years who have transitioned into the manufacturing, then into the services and everything, the populations have moved, historically has moved from the rural to urban settings. In the last 20-25 years, if you have seen China, it's the same thing that's been happening, moving from rural setting to urban setting. And in the next, definitely in the next 10-15 years, India, with the growth rate that it is having right now, about 6 to 7%, it's the same thing that's going to happen. I've been seeing it in my state of Andhra Pradesh, even for this, not only for the job opportunities, even for better education, better healthcare. I've known a lot of people who moved from villages into the towns and cities so that their son and daughter can get a better education and have better career. So yeah, it does provide a better option. There's a need for cooperation between not only between governments, between the citizens and between a lot of stakeholders. We've seen Delhi and what is happening for the last couple of decades. It's literally choking with the pollution. Every year we debate about it in the parliament. It's the same thing. If you think about Bombay and recently Hyderabad as well, most of these cities in the monsoon normally it gets submerged. It's the same thing with if you go to Bangalore, it's the same thing with regards to the traffic, where every citizen of Bangalore complains that the number of hours they spend sitting in the car is more than the amount of time they spend in the office, sometimes in the office. So we have a lot of issues with our cities, because most of these cities were is not planned but inorganically grown for the last 100 or 150 years. So they definitely needs a lot of improvements with respect to the infrastructure. And in the last 15-20 years, yes, we have been doing it, say with respect to the Delhi Metro that has been coming, and with respect to the various other cities which are getting the new metro. And but they definitely need better drainage system. Definitely need better pollution quality monitors, and traffic diversions and traffic control systems, and more importantly, safety for citizens of the city, because a lot of this influx has been happening from migration is happening, and when this migration is happening, there is no actual control or oversee of what is happening in each and every corner of the city. So there's a lot of things that have to come together, and we are going into a digital, 5G world,
going to have completely different problems than what we can actually talk about now. So there needs to be thorough discussion on it, and have these plans drawn up and get implemented on time. We are not actually preparing ourselves to meet these challenges. If you see in its United States of America, I think more than 80-85% of the population stays in the cities. That has gradually happened in the last 50-60 years. And it's going to happen, if not 80-85%, but at least 50-60% of the population of India is going to move to the cities. But we are doing few of the things really well, but we are really not doing a lot of the things, not even thinking about a lot of things that needs to be there for a city to grow in a fashion that it needs to go. If you've seen the most livable cities across the world, if you see the rankings in the last 10 years or 15 years, we don't see any of the Indian cities in the, at least not in the top 10, not even in the top 20 as well. So we need to actually put some benchmarks, draw some benchmarks from what perspective of each and every segment, and sit on it and make sure that they get implemented. So unless we do that, these Indian cities are really going to crumble with the influx of new citizens into the cities. It's a natural, once the economy is growing, that people migrate from, that's when historically been happening. Various countries it has happened. People migrate from the farming into either into the services or into the manufacturing. But in India, it's more of services than manufacturing. So we cannot force something to happen. But what we need to think about it is how well the rural population and rural infrastructure and rural societies we are going to save and make sure that they thrive. Definitely with government aim of doubling farmers' income, talking about it, and the recent nano fertilizers, all these new advancements that government is thinking about to bring in a lot of technology into the rural sector. Definitely, if not now, at least 10-15 years down the line, farming also will do much better. Say for example, if you look at the farming sector in Netherlands, it's something that anyone should be should actually try to emulate. The amount of exports that they're doing with respect to the food produce. I'm sure India, having these perennial rivers and great soil that is available, so we need to make sure that rural communities also will thrive with the better facilities and having a focused approach. One thing that really is bothering everyone in the country right now is their employment. There are a lot of youth that are coming out with the degrees in their hand, and there is so much that service sector can take in. Definitely the manufacturing sector has to pick up, but we have seen in the last 5-6 years that manufacturing sector, instead of growing, has gone back. So when we ask why it is not growing, one thing they keep saying is we are not competitive with our prices. When we ask why we are not competitive, every industry you talk to, there is one issue that they keep saying, which is the power sector. The power charges are too high. If you ask a semiconductor industry to set up here, they say the power charges are too high. It's not viable. Any company, if you ask them to set it up in India, one thing that they go back and say is like
the power, reliability of power and the power charges are too high. So I think the one, bringing all of this together, one thing that can actually do really well is investments, huge investments in renewable energy, wherein bring the power cost to an affordable level. At the same time, because of investments in manufacturing of all the equipment related to the renewable energy, the employment also gets youth get more employment. So I think investment into renewable energy, and also because the environmental concerns that we are facing. So that I think we should be very focused on. Everyone for being there for this insightful session. I would just like to thank the panelists for this year's discussion. Dr. Ashok Bajpai ji, Shri Vivek Tankha ji, Sant Balbir Singh Sichewal ji, Dr. Amar Patnaik, Dr. K. Keshava Rao, Dr. V. Sivadasan, Lavu Krishna ji, and special thanks to Rishabh team, Deepak's team, and the whole Valley of Words team. Also, Dr. Amna Mirza, who was the curator for this year's event. Next year, let's watch out for more interesting debate. Thank you so much, and all the best for the next session. Thank you.